Hello friends, welcome to Inspire Education. So today we are going to start fundamental analysis sessions. Technical analysis के almost सारे indicators cover कर चुके हैं अपन, and so today on we'll be starting up with fundamental analysis. So I won't be taking any topic as such today. I'll be just briefing you about what is fundamental analysis first. Let's see what is fundamental analysis. Fundamental analysis, it is the cornerstone of investing. Fundamental analysis cornerstone है investing का. If anyone wants to invest, he or she will be well versed with the concepts of fundamental analysis. There are an endless number of investment strategies that are very different from each other, yet almost all of them use the fundamentals. There बहुत सारी investment strategies है जो अपने आप से एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, लेकिन अपने जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो अपने को हर जगह काम आता है और हर जगह अप्लाई ज़रूर होते हैं. एंड so what is fundamental analysis? It is the examination of the underlying forces that affect the well-being of an economy or industry groups or companies. तो fundamental analysis basically examine करता है उन underlying forces को जो affect करते हैं on a whole अपनी economy को, industry groups को and companies को. As with most analysis, the goal is to derive a forecast and profit from future price movements. The goal of fundamental analysis is the same as that of technical analysis, to derive a forecast and profit from future price movements. अपन forecast कर सके कि price किस direction में move करेंगे और उनसे अपने आप को profit कर सके. So, to forecast future stock prices, fundamental analysis combines economic, industry and company analysis to derive stocks current fair value and forecast future value. देखिए technical analysis में it was all about prices and volumes, but in fundamental analysis it is all about the company's balance sheets, earnings, the company's analysis, or it's all about the company itself. कि how is the company doing, how strong is the company in itself, so that it could drive द कंपनी कंडीशंस हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो उस कंपनी की इंडस्ट्री कंडीशंस हैं, वो कैसे उस स्टॉक के प्राइस को ड्राइव कर सकती हैं. कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के अर्निंग्स, सेल्स, ये सब कैसे स्टॉक के प्राइस को ड्राइव कर सकती है, किस डायरेक्शन में ड्राइव कर सकती हैं. सो उससे अपन इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, कंपनी एनालिसिस करते हैं ताकि अपन एक स्टॉक की करंट फेयर वैल्यू पता लगा सके और उसके बेसिस पे अपन स्टॉक की फ्यूचर वैल्यू पता लगा सके. इफ फेयर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द करंट स्टॉक प्राइस, अगर फेयर वैल्यू और करंट स्टॉक प्राइस इक्वल नहीं है तो फंडामेंटल एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं दैट द स्टॉक इज either overpriced or underpriced. If it is underpriced, it is at least going to come to the fair value, तो stock बढ़ेगा. And if it is overpriced, it is again going to come down to the fair value, तो stock घटेगा and the market price will ultimately gravitate towards its fair value. By believing that prices do not accurately reflect all available information, fundamental analysis look to capitalize on the perceived price discrepancies. The very basics when talking about stocks, fundamental analysis is a technique that attempts to determine a security's value by focusing on the underlying factors that affect a company's actual business and its future prospect. Generally कंपनी के बेसिक्स पे, कंपनी की अंडरलाइंग फैक्टर्स पे, उसके एक्चुअल बिजनेस पे, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे, इन चीज़ पे एम्फेसिस देता है फंडामेंटल एनालिसिस. ऑन अ ब्रॉडर स्कोप यू कैन परफॉर्म फंडामेंटल एनालिसिस ऑन इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स पे भी किया जा सकता है और द इकोनॉमी एज अ होल और ओवरऑल इकोनॉमी पे भी किया जा सकता है. द टर्म सिंपली रिफर्स to the analysis of the economic well-being of a financial entity as opposed to its price movements. So, fundamental analysis serves answers to the following questions as: is the company's revenue growing? कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी जितना कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रही है उस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यूज़ ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सेल्स, बॉटम लाइन ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स क्या है, ईबीडी क्या है, डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज हो रहा है, एवरीथिंग इज टेकन इनटू अकाउंट ऑन
क्वार्टर बाय क्वार्टर सेल्स इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही हैं, जो सेल्स टारगेट लिए गए थे वो मीटअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या कंपनी ने जितने प्रॉफिट अजम्पशंस लिए थे वो फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट थिंग. ऑल दीज थिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट. Is it actually making a profit? As I said, is the company into a profit? What is the bottom line growth percentage of the company? All these things are taken into account. Then is it in a strong enough position to beat out its competitor? Analysis of the competitors की sales based on the market cap, कि क्या market cap किसकी ज़्यादा है, किसके वॉल्यूम ज़्यादा हो रहे हैं, किसके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा ड्राइव कर रही हैं कंपनीज. देन इज इट एबल टू रीपे इट्स डेट. ठीक है, डेट रीपेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है कंपनीज की. मीन्स द लोन्स दैट कंपनीज आर इज टेकिंग आर बीइंग रीपेड एट प्रॉपर टाइम्स और नॉट. व्हाट इज द debt coverage ratio that the company is having. The various ratios also that are considered in the fundamental analysis. And is the management trying to cook the books? Cook the books is window dressing. कि ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट कहीं विंडो ड्रेसिंग कर रही है. हो सकता है कंपनी की बैलेंस शीट जितनी अच्छी नहीं हो जितना वो विंडो ड्रेस करने की कोशिश कर रहा है. सो ऑल these things are taken into consideration in fundamental analysis. Then a top-down approach is used in fundamental analysis. This is the top-down approach. सबसे पहले fundamental analysis किया जाता है. It seeks the intrinsic value of a stock. It tries to find out the intrinsic value of the stock. First of all, it does the economic analysis. Economic analysis में अपन ये economy का analysis करने की कोशिश करेंगे. जैसे GDP क्या है, is the GDP growing, is the inflation growing or decreasing, then the interest rates of the country, political stability, what are the tax rates that are being charged, what is the employment that is there. Then after economic analysis, if the economic analysis is fair enough, it gives fair enough results, then an industry analysis is used. Industry analysis में we see the characteristics of the industry की characteristic क्या है, सेक्टर में कितना ग्रोथ है, किस फेज पे है ये कंपनी, ये सब एनालाइज किया जाता है. डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑल दीस आर एनालाइज्ड. एंड देन कंपनी एनालिसिस इज डन. इन कंपनी द प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसीज, फ्यूचर ग्रोथ रेशियोज, ऑल दीस आर स्टडीड. Then talking about fundamental analysis, there are basically two types of fundamentals of a company that are studied. These are quantitative and qualitative. You could define fundamental analysis as researching the fundamentals, but that doesn't tell you a whole lot unless you know what fundamentals are. As mentioned in the introduction, the big problem with defining fundamentals is that it can include anything related to the economic well-being of a company. Means fundamental अपने आप में बहुत broad term हो जाता है. Obvious items include things like revenue and profit. Revenue and profit are the obvious terms that are used in fundamental. Fundamentals also include everything from a company's market share से लेके quality of its management सब आ जाएगा इसमें. And the various fundamental factors that can be grouped into two categories, quantitative and qualitative. And quantitative is which is capable of being measured or expressed in numerical terms, and qualitative is of course related to or based on the quality or character of something, often as opposed to the size and quantity. In our context, quantitative fundamentals are numeric, measurable characteristics about a business. It's easy to see how the biggest source of quantitative data is the financial statements. You can measure revenues, profits, assets and more with great precision in this case. Then talking about fundamental analysis, turning to the qualitative factors, qualitative fundamentals which are there. These are less tangible factors surrounding a business, things such as the quality of a company's board of directors, board members, key executives, its brand name, recognition, patents, proprietary technologies, etc. If we contradict or if we compare quantitative versus qualitative, neither quantitative nor qualitative analysis is inherently better than the other. Instead, many analysts consider qualitative factors in conjunction with the hard quantitative factors. So many companies do this way. And this was all about